Good morning to all of you. So, dear students, we are going to study our sixth chapter. Its name is Nouns and Case. So, please open page number 21st of your grammar book. So, nouns and case we are going to study. So, let's start to read this chapter. Nominative case. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. So first of all, we have to understand what is the case. Case क्या होता है? So case means in Hindi it is called कारक. कारक को हम case बोलते हैं English में. In another way, you can understand it like what is the role of a noun in a sentence is called a case. Noun का जो sentence के अंदर role होता है वो role कहलाता है उसका case. तो as we know that noun is used in various way in the sentence. Sometimes it is used as a subject in the sentence and sometimes it is used as an object in the sentence. So these type of role is called case of noun, right? So when noun is used as a subject in the sentence, that is called nominative case. So we have to understand this thing like nominative case, objective or accusative case, and possessive case. So three types are cases are there. Nominative case, second is objective case, that is also called accusative case, and third is possessive case. तो तीन तरह के केस होते हैं, nominative, objective and possessive, right? सो पॉजेसिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोमिनेटिव केस. सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, यू कैन सी इट हियर. Navya ate ice cream. So what is the Navya? Navya is a name, but it is used here as a subject, so that is nominative case. See the second sentence. The question is wrong. The question is wrong. The question is like a noun, but it is used here as a subject. So that means like when any noun is used as a subject, in that case, that is called nominative case, right? Now let's understand objective case. It is also called accusative case. So when noun is used as an object, it is called objective case. How? Like see this example. Navya ate ice cream. Navya ate ice cream. Navya ने ice cream खाई. So ice cream is what? It is a noun. But what is the role of this noun in the sentence? Role is object. So when any sentence is used in a sentence as a subject is called subjective case or nominative case, but when any noun is used in a sentence as an object, that is called objective case, right? Come on the page number 22nd. 22 means possessive case. When a noun shows possession, it is said to be in the possessive case. जब कोई noun possession को show करता है, अधिकार को show करता है, that is called possessive case. Look at these examples. Anu's bag is on the table. So Anu has a possession on the bag. That's why we have written here Anu's bag is on the table. The dog bit the cat's tail. Means like cat has a possession on the tail. So cat is possessive case, right? The apostrophe used to show possession is called apostrophe. Means like when we show the possession of something, like we have to use the comma. That comma is called apostrophe, right? Come on the D point now. The possessive case can be used to convey meanings अदर देन possession also. जो possessive case होता है वो मीनिंग कन्वे करता है possession के अलावा भी. जैसे कि लॉर्ड रामास टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल जो लॉर्ड रामा का हो, यानी कि वो उसका अधिकार ना हो परंतु वहाँ उसकी पूजा होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉर्ड रामास टेम्पल. वर्ड्सवर्थ पोएम्स. तो वर्ड्सवर्थ कट प्लीज स्टार्ट. वर्ड्सवर्थ पोएम्स. सो ये जो पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ की हैं. नेक्स्ट द डॉग्स फूड. तो ऐसा फूड नहीं है कि जो डॉग्स का बना हो, ऐसा फूड जो डॉग्स के लिए हो, दैट्स आल्सो कॉल्ड डॉग्स फूड. नाउ कम ऑन द ई पॉइंट. हाउ टू फॉर्म द पजेसिव केस. पजेसिव केस किस तरह बनाए जाते हैं? इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स वी यूज
apostrophe s. Apostrophe means like upper side comma. So अगर कोई नाउन सिंगलर है तो हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, उसके बाद एस लगाना होता है. बाय दिस वे वी मेक द वी शो द पोजेशन ऑफ समथिंग. लाइक द हाउस ऑफ माई अंकल, वी कैन से दिस माई अंकल्स हाउस. मेरे अंकल का घर, तो हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माई अंकल्स, अंकल के बाद कोमा अपोस्ट्रोफी एंड देन एस देन हाउस. The palace of the king, the king's palace. The car of Mr. Das, Mr. Das' car. So in this way you can form the possessive case. Come on the second point of E. With singular nouns ending in S and S are both acceptable. Mr. Das' car. Mr. Das's car. So you can see that when any name ends on S letter, in that case we can put just apostrophe, which is also called comma, and then S. If up to us, either we can leave the S or we can mention the S. If any word, any noun ends on S letter and we make them possessive case, in that case you can leave and add also, right? Like Yeats poetry, Yeats poetries. S is preferred if its additional does not make a word sound very awkward. अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस को प्रेफर किया जाता है अगर उसका साउंड बिल्कुल awkward सा ना लगे तो. Third point, with plural nouns that end in s, we add just an apostrophe after s. That is, we do not use s, we use only apostrophe. अगर कोई नाउन s पे एंड होता है तो हम सिर्फ apostrophe लगाते हैं, एस नहीं लगाते. जैसे कि द हॉस्टल मेंट फॉर द बॉयज़, एक ऐसा हॉस्टल जो बॉयज़ को हम, तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि बॉयज़ के बाद कोमा लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे. द यूनिफॉर्म्स ऑफ द सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स. कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, with plural nouns that do not end in s, we use apostrophe s. ऐसे नाउन जो s पे एंड नहीं होते, वो प्लूरल हों तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और s भी लिखते हैं. जैसे कि द क्लब ऑफ मैन, मेंस क्लब. द बुक्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, राइट. कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, we use apostrophe or apostrophe s with living beings. Apostrophe is not used with non-living objects. apostrophe s and apostrophe हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग के साथ. अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है तो नॉन लिविंग बींग्स हैं तो उसके साथ हम apostrophe s नहीं यूज़ करते, apostrophe नहीं यूज़ करते. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट से, हम ऐसा नहीं कह सकते द पिक्चर्स फ्रेम, पिक्चर्स का फ्रेम, हम इसको ऐसे कह सकते हैं द फ्रेम ऑफ द पिक्चर्स. वी डू नॉट से द कार्स व्हील्स, हम इसको ऐसे कहना चाहिए हमें द व्हील्स ऑफ द कार. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. Formation of possessives. Singular nouns apostrophe then s. Singular nouns ending in s, apostrophe then s, and we can leave the s also. Plural nouns ending in s, apostrophe, just apostrophe we have to mention. Plural nouns not ending in the s, apostrophe then s we have to mention. S usually not used with the non living things. जो non living things होती हैं उनके साथ हम s apostrophe s नहीं यूज करते. F point, if we treat an object as living beings, it is quite in order to use an apostrophe with it. My country's progress, duty's call. तो जब हम किसी चीज़ को लिविंग बीइंग की तरह उसको ट्रीट करते हैं तो उस केस में हम उसको अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि माई कंट्रीज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का जो काम होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है, ह्यूमन बीइंग की तरक्की होती है, तो उस बट हम कंट्री को ह्यूमन बीइंग मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. ड्यूटी कॉल, कॉल कौन करते हैं, इंसान करते हैं, ड्यूटी थोड़ी कॉल करती है, परंतु यहाँ पे हम उसको लिविंग बीइंग मान के चल रहे हैं तो इसलिए इन दैट केस वी हैव टू पुट अपोस्ट्रोफी एस. Come on the G point. We use an apostrophe with nouns denoting time, space or weight. ऐसे नाउन जो टाइम को बताते हैं, स्पेस को बताते हैं, वेट को बताते हैं, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. जैसे कि अ डेज जर्नी, अ वीक्स स्टे, अ मीटर्स लेंथ. Note the use of apostrophe s before worth.
a rupees worth of peanuts, 5 rupees worth of sugar. वर्थ वर्ड से पहले हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है अगर वो नाउन सिंगुलर है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो हमें जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाना है. So now on the behalf of this understanding you have to solve exercise number 1, 2 and 3. Means first, second and third, these exercises you have to solve.